of everything else rise, it's going to buy you fewer instant noodles, less gas, and it simply holds less value year after year. Okay, let's move to section 2, inside the credit machine, the ultimate trap. So there is a massive, massive difference between those plastic cards sitting in your wallet. A debit card is super straightforward, right? You swipe and the money gets cut straight from your own bank balance. It's yours. But credit is literally debt just wrapped up in a smooth, frictionless transaction. When you swipe a credit card, your bank account stays exactly the same. Instead, you are instantly borrowing money from the issuing bank. To put the scale of this trap into perspective, get a load of this number. In 2025, Americans are sitting on over $1.2 trillion in credit card debt. Trillion. And why? Because of the minimum payment trap. Your bill shows you owe $1,000, but it nicely says, hey, you only need to pay $25 right now. With the late fee, and they think they're doing fine. But that remaining often at average interest rates above 20%. The entire system is engineered to keep you paying that interest for as long as humanly possible. Exact pathway of a swipe under the dominant open loop network. Visa actually doesn't lend you any money. The bank does. Visa is just the digital highway that connects you, the bank, and the merchant. And for providing that convenient highway, Visa makes about 25 cents on every $100 spent globally. These hidden swipe fees are so massive that stores are often forced to raise their prices on everyone just to cover them. That means even if you're paying in cash, you end up paying extra to subsidize the credit network. And they use that data to target affluent spenders, the folks who pay their balances in full, creating these highly tailored reward programs that keep those high spenders completely locked into their ecosystem. Moving right along to section 3, decoding the credit score, the shadowy algorithm. Your credit score is just a 3-digit number, ranging from 300 to 850. Welcome to the Welcome to the Explainer. Today, we're taking a deep dive to unplug from the invisible economic forces that literally dictate our daily lives. Back and look at the massive financial matrix running the whole show. We're going to break down the hidden traps, the algorithms, and the exact leverage you need to understand. Okay, let's dive right into this. Where is your money right now? Honestly, if you just deposited your paycheck, you probably down at your local bank, right? Maybe guarded by a dragon. Well, as a
your wallet. But here's the thing. Interest and fees, that's only one part of the story. There is a Welcome to The Explainer. Today, we're taking a deep dive to unplug from the invisible economic forces that literally dictate our daily lives. You go to work, you pay your taxes, you swipe your card. But how often do we actually step back and look at the massive financial matrix running the whole show? We're going to break down the hidden traps, the algorithms, and the exact land. Okay, let's dive right into this. Where is your money right now? Honestly, if you just deposited your paycheck, you probably picture it sitting perfectly safe in some giant steel vault down at your local bank, right? Maybe guarded by a dragon. Well, as it turns out, that assumption couldn't be further from the truth. Which brings us to part one, the illusion of money. So here's how the system actually works behind the curtain. It's known as fractional reserve banking. And really, banks are just financial matchmakers. When you deposit $1,000, the bank doesn't just lock it away in a safe. They keep a tiny fraction on hand and immediately turn around and lend, say, $900 of it to someone else who wants to, relying entirely on the fact that not everyone is going to ask for the exact same time. But you know, when they do, like we all saw during the massive 2008 crash, the entire system will quickly crumble. And it actually gets even worse. Welcome to The Explainer. Today, we're taking a deep dive to unplug from the Welcome to The Explainer. Build a Hey there, and welcome to The Explainer. I am absolutely thrilled you're here with us today. We are about to take a really fascinating journey to expose the hidden mechanics that essentially control our modern lives. You know, from the money in your pocket to the software you use every single day, there are these invisible systems dictating the rules of the game. But what happens when you actually learn how those systems operate? Well, let's find out. You interact with invisible systems every day designed to extract your wealth. What if you knew their cheat codes? That right there is the core question we're answering today. Think of this explainer as pulling back the curtain on the great Wizard of Oz of everyday financial and technological illusions. Because I promise you, once you see the strings, you can literally never unsee them. Okay, let's take a super quick look at our roadmap. Today we're going to cover 1, the rules of money, 2, inside the credit machine, 3, decoding
It ruins your life. It will eventually help you buy a house. Section 4. Playbook. Extracting value back. Now that we've analyzed exactly how these massive systems extract value from you, it's time to flip the script. Think about this. Interest is money's way of charging rent to exist in someone else's hands. When you borrow on a credit card, you're the one paying that rent. But when you invest, you become the landlord. You are earning the rent. That shift turns your money into your hardest working, unpaid employee. And this brings us to the fundamental difference between simple and compound interest. Simple interest is just a flat fee. Thanks for playing. But compound interest? Oh, that is the ultimate cheat code. It means every dollar you earn in interest creates a tiny clone of itself, and those clones immediately start earning rent too. Over decades, this silent engine duplicates your money, it absolutely crushes inflation, and it turns small, consistent investments into massive wealth. You can actually structure this compounding power across your entire lifetime. Check out how this strategy shifts across different age brackets. If you're under 25, your biggest advantage is time. That allows you to take on higher risk for higher reward, allocating heavily into high growth mutual funds and even throwing some crypto in the mix. But as you cross over into your 50s, the focus has to shift toward capital. नए ट्रेडर्स के लिए तैयार किया गया है। हम एक तजुर्बाकार ट्रेडर के 6 साल के तजुर्बात का निचोड़ देखने वाले हैं। ये वो लेसन्स हैं जो मुनाफा और नुकसान की भट्टी में तप कर निकले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस सफर का खाका कुछ इस तरह होगा। पहले सही मार्केट का इंतखाब, फिर ब्रोकर्स का अहम किरदार, उसके बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनना, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाना और आखिर में बैक टेस्टिंग और डेमो अकाउंट्स पर बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले और सबसे अहम कदम की तरफ, सही मार्केट का इंतखाब। गुज़िश्ता 6 सालों की तहकीक में 3 बड़ी मार्केट्स का बहुत डीपली जायजा लिया गया है। इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और फॉरेक्स। इन सालों के उतार चढ़ाव और बेशुमार कामयाबियों और नाकामियों के बाद सोर्स ने आखिरकार अपना पूरा फोकस सिर्फ फॉरेक्स पर सेट किया। लेकिन सोचिए ज़रा, आखिर फॉरेक्स ही क्यों? इस पॉइंट को समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल देखते हैं। इंडियन मार्केट को किसी गांव के एक रेस्टोरेंट की तरह समझें। वहाँ ग्रोथ इंतहाई महदूद है, टैक्सेस ज़्यादा हैं, ब्रोकरेज फीस आसमान से बातें करती हैं और लेवरेज ना होने के बराबर है। मतलब शुरू से ही हालात एक नए ट्रेडर के खिलाफ होते हैं। दूसरी तरफ फॉरेक्स मार्केट मुंबई जैसी किसी बड़ी मेट्रो सिटी के रेस्टोरेंट की तरह है। यहाँ वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि मौके लामहदूद हैं। एक छोटे गांव में अगर पूरा गांव भी खाना खाने आ जाए ना, तब भी ग्रोथ की एक लिमिट होती है, जबकि मेट्रो सिटी में इम्कानात की कोई हद नहीं होती। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ब्रोकर्स का अहम किरदार, जो दरअसल दरमियानी कड़ी होते हैं। असल में ये ब्रोकर होता क्या है? सिंपल अल्फाज में ये एक इदारा या मिडिलमैन है। देखिए, अगर मार्केट में किसी ने गोल्ड खरीदना है तो जाहिर है किसी न किसी को वो गोल्ड बेचना भी होगा। ब्रोकर एक मखसूस फीस लेकर खरीदार और बेचने वाले दोनों को मिलाता है और इन ट्रांजैक्शंस को मुकम्मल करवाता है।
इस मिडलमैन के बगैर सीधा मार्केट में ट्रेड करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। ये एक ऐसी ठोस हकीकत है जो सालों के तजर्बे के बाद ही समझ आती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प लेकिन खतरनाक बात सामने आती है। एक बुरा ब्रोकर किस तरह एक मामूली से नुकसान को बहुत बड़े मसले में तब्दील कर सकता है। अगर फर्ज करें कोई ट्रेड 50% नुकसान पर खत्म होती है, तो एक बुरे ब्रोकर की छुपी हुई फीस और हेवी कमीशंस उस नुकसान को 60% तक पहुंचा सकती हैं। नतीजा क्या निकलता है? उस नुकसान को रिकवर करने का वक्त और लगाई जाने वाली मेहनत दुगनी हो जाती है। और हाँ, से अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स के भाग जाने पर होता है। यहाँ पे सोर्स की तरफ से एक बहुत संगीन वाजे करता है कि आजकल एक धोखेबाज या फेक ब्रोकरेज शुरू करना कितना सस्ता और आसान हो गया है। यकीन मानिए, सिर्फ 20 से 30 लाख रुपए की लागत से ऐसी फ्रॉडुलेंट कंपनीज खरीदी सकती हैं जो लोगों का पैसा लूटती हैं। इसीलिए खुद से डीपली रिसर्च करना किसी भी सरमायाकारी को महफूज रखने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अपना पैसा किसी ऐसे सिस्टम के हवाले बिल्कुल नहीं किया जा सकता जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट ना हो। तीसरा अहम पॉइंट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का चुनाव, टूल सेलेक्ट करना। यहाँ उन प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट मौजूद है जो फ्रंट एंड ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें मेटा ट्रेडर 5 और ट्रेड लॉकर सबसे ज्यादा नुमाया है। क्यों? क्योंकि इनका इस्तेमाल निहायत आसान है और एग्जीक्यूशन बहुत तेजी से होती है। एक आम ट्रेडर के लिए किसी मुश्किल या पेचीदा सॉफ्टवेयर में उलझने के बजाय ऐसे प्लेटफॉर्म्स का चुनाव बेहतर रहता है जो सिंपल हों और जहां ट्रेड्स बगैर किसी लैग या रुकावट के प्लेस हो सके। तजर्बा यही सिखाता है कि ट्रेडिंग में सादगी ही असल ताकत है। चौथा नंबर, एक बेहतरीन और लीन हिकमत अमली या स्ट्रेटजी बनाना। असल ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कैसे होती है? तो इस सारे शोरों गुल और इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बीच सबसे अहम कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? वो है लिक्विडिटी। ये वाजे करती है कि मार्केट में बड़े खिलाड़ी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा कहाँ और किस तरफ मूव कर रहे हैं। बाकी तमाम चीजें ना बस सरसरी सी हैं। अगर इसे एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर उबूर हासिल कर लिया जाए तो चार्ट्स को समझना लिटरली बहुत आसान हो जाता है। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की नजर हमेशा यही तलाश करती है कि असल पैसा कहाँ जा रहा है। फजूल की मालूमात से बचने के लिए सोर्स ने यहाँ कुछ
मुकम्मल करवाता है। इस मिडलमैन के बगैर सीधा मार्केट में ट्रेड करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। ये एक ऐसी ठोस Cinco हकीकत veinte है जो papa. सालों के तजर्बे के बाद ही समझ आती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प लेकिन खतरनाक बात सामने आती है। एक बुरा ब्रोकर किस तरह एक मामूली से नुकसान को बहुत बड़े पता नहीं मसले भाई, में तब्दील कर सकता है। अगर पता फर्ज नहीं। करें कोई ट्रेड 50% नुकसान कुछ पर नहीं। खत्म होती है, तो एक बुरे ब्रोकर की छुपी हुई फीस और हेवी कमीशंस उस नुकसान को 60% तक पहुंचा सकती हैं। नतीजा क्या निकलता है? उस नुकसान को रिकवर देखो, करने का वक्त और लगाई जाने वाली मेहनत दुगनी हो जाती है। चाबी खाता और हूँ। हाँ, ऐसे अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स के मात से बचने के लिए सोर्स ने यहाँ कुछ जरूरी टेक्निकल्स पॉइंट आउट किए हैं। चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर दर्जनों किताबें पढ़ने के बजाय सिर्फ इन 3-4 बुनियादी इंडिकेटर्स पर फोकस करना चाहिए। लिक्विडिटी सबसे टॉप पर है, उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस आते हैं, फिर ट्रेंड लाइंस आती हैं जिनसे लिक्विडिटी की डायरेक्शन समझ आती है, और आखिर में कैंडल्स का वॉल्यूम और मोमेंटम। बस यही चंद चीजें हैं जो असल अहमियत रखती हैं। सालों की ठोकरें खाने के बाद ट्रेडर्स को यही बेसिक सच्चाई समझ आती है। जब ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स थोड़ा क्लियर हो जाए, तो एक एक्शनेबल ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए कुछ लॉजिकल स्टेप्स उठाए जाते हैं। पहले मार्केट को डिफाइन किया जाए, फिर एक मखसूस इंस्ट्रूमेंट चुना जाए, जैसे मिसाल के तौर पर गोल्ड। उसके बाद अपने लिए एक स्पेसिफिक टाइम विंडो सेट की जाए, और सबसे आखिर में सख्त रिस्क मैनेजमेंट लागू की जाए। ये 4 कदम किसी भी स्ट्रैटेजी की ऐसी मजबूत बुनियाद बनाते हैं जो मुश्किल वक्त में ट्रेडर का अकाउंट वॉश होने से बचा कर रखती है। अब आते हैं 5वें और आखिरी अहम मरहले की तरफ, बैक टेस्टिंग और डेमो अकाउंट्स। अपनी Okay, let's dive right into this explainer with a concept क्या that लाना? honestly sounds completely unhinged at talking about applying high-stakes Wall Street financial strategy to literal apocalyptic survival. Today, we're analyzing two incredibly different sources that actually share the exact same DNA. On one hand, we've got an intensive financial analysis of how to navigate a brutal bear market using 7 strategic stock picks. And on the other, a gritty survival